Namaste, dosto. Most Indians have the wrong amount in their emergency fund, kept in the wrong place. Today we fix both problems. क्योंकि financial freedom की पहली सीढ़ी है सुरक्षा. So, what exactly is an emergency fund? समझ लो, यह आपकी financial shield है. Job loss, sudden medical bills, गाड़ी का रिपेयर या कोई भी unexpected खर्चा. आपकी सेविंग्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है. अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ मच डू यू नीड? A standard rule of thumb is 6 months of your essential expenses, minimum. Yes, 6 months. अगर आपके मंथली खर्चे 30,000 हैं, तो आपको कम से कम 1.8 लाख का इमरजेंसी फंड चाहिए. अगर आपकी जॉब स्टेबिलिटी कम है या डिपेंडेंट्स ज्यादा हैं, तो 9 to 12 months तक भी रख सकते हैं. सोच लो, इतना पैसा आपको कितनी मेंटल पीस देगा. नेक्स्ट, द क्रूशियल पार्ट. वेयर टू कीप दिस मनी? यहां गलती सबसे ज्यादा होती है. आपको हाई रिटर्न्स नहीं, बल्कि लिक्विडिटी और सेफ्टी चाहिए. योर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट won't cut it. Look for high-yield savings accounts from niche banks or digital-first options. Many are offering 7% to 7.5% interest rates these days. This is great because your money is still accessible within minutes and it's beating inflation better than a regular savings account. Another excellent option, especially for the larger chunk of your fund, is a liquid mutual fund. These funds invest in very short-term market instruments and are highly liquid. You can typically get your money in T+1 day, sometimes even instant redemption up to a certain limit. Currently, good liquid funds are generating returns in the range of 7% to 8%. But remember, this is for education only. Past returns don't guarantee future performance. The key is quick access, not aggressive growth. So in short, build up at least 6 months of expenses. Keep it in high-yield savings or liquid funds for decent returns and quick access. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें. If you found this helpful, please hit that subscribe button and tell us in the comments, how much do you have in your emergency fund right now? Let's start this conversation.